भारत के मेघालय प्रदेश के शिलांग शहर में रहने वाली हसीना खरबी प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हसीना के काम की प्रशंसा होती रहती है। अनेक सामाजिक पुरस्कारों से सम्मानित हसीना देश का चर्चित चेहरा है। हसीना ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जड़ मूल से नष्ट करने के अपने मिशन से जुटी हैं। वे सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। अब तक लाखों महिलाओं के जीवन में परिवर्तन ला चुकी हैं। उन्हें अनैतिक देह व्यापार, खरीद फरोख्त के दलदल से बचा चुकी हैं। वह उनका पुनर्वास भी कर चुकी हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए हसीना द्वारा बनाया गया इम्पल्स मॉडल प्रभावी सिद्ध हुआ है व अनेक सरकारों ने इसे अपनाया है। आइए देखते हैं हसीना खरबी से हमारी हुई यह बातचीत आपके अपने कार्यक्रम वी टॉक में। WTV के वी टॉक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूर्वोत्तर भारत के शहर शिलांग में और आज मैं यहाँ मिलने आई हूँ यहाँ की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हसीना खरबी से। और वी टॉक में आज हम उनसे बात करेंगे उनकी सामाजिक कार्यों की, उनकी जर्नी के बारे में। वो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए लंबे अरसे से काम कर रही हैं। आइए मिलते हैं हसीना खरबी से। हेलो हसीना, कैसी हैं आप? ठीक है। हसीना, हम आपकी सोशल एक्टिविज्म की जो जर्नी है उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। और सबसे पहले आपके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, आप कहाँ पैदा हुई, कैसे बड़ी हुई और बचपन में आपके क्या सपने थे? आप मैं शिलांग में पैदा हुआ है और मैं मेघालय की रहने वाली है। और मेरा जो इम्पल्स NGO नेटवर्क में था, मतलब ये एक सपना था जब मैं छोटे से मतलब सेंट जोसेफ स्कूल में था। एक वॉलंटियर वर्क जो LTS लीडरशिप ट्रेनिंग सर्विस का जो हम मतलब ईच वीकली में हम लोग काम कर रहा था। तो दैट वाज द मोटिवेशन जो मिला था कि हम कुछ करना चाहता है, क्या करूँ। लेकिन जो डेवलपमेंट वर्क जो पहला जो एक्सपोजर था स्कूल से, तो ये सवाल बहुत आते हैं मेरा साथ कि हमको जब बड़ा होने से कुछ करना चाहता है और जो डेवलपमेंट का काम है ये सिर्फ बड़ा आदमी के काम नहीं है, लेकिन young people के लिए भी कुछ कर सकता है। So with that motivation, I continued the journey, and I was very much a young person in school going, and I never knew ये development काम क्या होता है, NGO क्या होता है, activism क्या होता है। लेकिन जो सपना था कि हम कुछ करना चाहते हैं और ये काम जो हम कुछ मतलब जब बनेंगे तो एक अच्छा से काम करेंगे, लेकिन मेघालय में करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में करेंगे। वो तो बहुत मतलब साफ था कि मेरे दिमाग में ये करेंगे। देन दैट्स व्हेन मी एंड माय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जब सेंट जोसेफ स्कूल से जब हम मतलब क्लास 10 हाई स्कूल ख़त्म हुआ था, देन आई टोल्ड माय फ्रेंड्स लेट्स डू समथिंग, एंड द फ्रेंड्स सेड ओके। सो दैट फर्स्ट स्टेप वाज दैट वी शुड सपोज टू डू एन अलुमनाई, जो अलुमनी होता है स्कूल का, अलुमनी होता था। तो मेरा दोस्त तो बोलता हाँ करेंगे, लेकिन उस टाइम सब लोग बहुत छोटा था, एंथुजियाज्म तो था, लेकिन सब मतलब अपना अपना ड्रीम था। देन बट दे ऑल सपोर्टेड मी वेरी मच, एंड इन द प्रोसेस जो पहला काम हम लोग चिल्ड्रंस की मतलब चाइल्ड लेबर की काम में कर रहा था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग ये देख रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर बहुत था, चिल्ड्रन गर्ल चाइल्ड के बारे में। तो ये हम लोग फंड रेजिंग प्रोग्राम अवेयरनेस कर रहा था, ये सब कर रहा था। So when I was doing all of that, I realized that we could not do just as a group of young friends. We have to do through an NGO or through an organization. So that's how we got ourselves registered, and the organization grew. Or now it's 15 long years that the organization has been working fully, but in establishment is 20 long years now, taking back the journey of way back when I was in school. But what I would like to say is that every young person कुछ ड्रीम होता है, सपना होता है, लेकिन very few of us pursue that dream. तो मैंने pursue किया था, challenges मिला था, लेकिन जो पैशन लेवल था वो years में मतलब डेवलप हुआ है, and that's where I am today. कि जब हम बहुत युवा होते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ एनर्जी होती है। हाँ, एनर्जी बहुत होती है और to make mistake we don't mind. We continue to make mistake, we continue to do our work, and I think that's the best part of being young. बिल्कुल।
अच्छा, हसीना, आप मुझे बताएंगी कि मुख्य समस्या क्या है, महिलाएं किससे जूझती हैं ज़्यादा, क्या इश्यूज़ क्या हैं अपने इस नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा बड़े इश्यूज़ क्या हैं? वुमेन इश्यूज या महिलाएं जो इश्यू होता है ये मतलब दुनिया भर में एक ही होता है। डिफरेंस ये नहीं है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में है थोड़ा तो अच्छा अलग है, अलग है, या नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा अलग है। आई थिंक women's issues are very much the same everywhere. We face violences, we face abuses, we face rape. So I think globally the issue of women is very much similar. Challenges are very much similar, no matter from where we come from, in which part of the world we come from. Maybe in some point we are a little bit different, because in the northeast culturally our culture is more open, so we are a bit different considering the other part of India, but when it comes to uh, situation and crime, it's the same. जी, सभी तरीके के सब तरीके का क्राइम्स होता होता है है। यहाँ पर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्राइम बहुत होते हैं सब, I mean all over India. And if we are talking about abuse or rape, this also happens here, you know. So I think as a person who have worked for the last 20 years on the issue of women and children, I don't see that there's a difference, that we don't face those crimes. We face the same way, just like any part of India. And in terms of complexity, that complexity is different. मतलब यहाँ का complexity और northern India का complexity थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग है क्या और वुमेन ट्रैफिकिंग क्या है? ना ट्रैफिकिंग जो हम लोग का काम जो कर रहा है ये 15 साल से, हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग एक किस्म का जो क्राइम रिलेटेड मतलब इट्स अ क्राइम इशू. And the crime issue which is related to child and women trafficking, it's a lot to do with sexual exploitation, prostitution की तरफ है, and labor की तरफ भी है, organ trafficking के लिए भी है. So people get trafficked for various purposes, and one of the major purposes is sexual exploitation, which is 60% of that, whether it's a child or a woman, they get trafficked for the purpose of exploitation in the sex industry. And I think because there's a demand, then supply will be there. But we also have seen कि trafficking, child trafficking, labor की तरफ बहुत ज़्यादा है. And that is also one of the challenging problem जो हम लोग मतलब इतना 15 साल से देख रहा है कि the demand for child labor और sexual exploitation थोड़ा ज़्यादा है women trafficking से तरफ. कभी कभी हम लोग cases जो हम लोग डेल किया है 15 साल से, ये देखा है कि एक चाइल्ड 12 साल से ट्रैफिक हुआ है. जब हम लोग रेस्क्यू करेंगे, हम लोग जब रेस्क्यू किया है वो 20 साल में हम लोग रेस्क्यू, तो इट मीन्स हाफ ऑफ उसका चाइल्डहुड उसका एक्सप्लॉइट चला गया है. तो दैट्स द चैलेंजेस ऑफ ट्रैफिकिंग दैट वी हैव. एंड ट्रैफिकिंग इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी. इफ a child or a woman has been taken and has been exploited for any kind of commercial sexual exploitation or any kind of bonded exploitation without the consent of the person, that is called trafficking. एक तो आप ट्रैफिकिंग से बच्चों को बचा लेती हैं, बहुत महिलाओं को बचाते हैं. इसके अलावा वुमेन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट फोकस और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम लोग काम कर रहा है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की तरफ मतलब बहुत काम कर रहा है. और हम लोग का जो कवरेज है वो 8 स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 8 स्टेट हम लोग कवरेज कर रहा है. और ये जो हम लोग जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मतलब आई मीन एप्लीकेशन जो इम्पल्स मॉडल बोलते हैं, सो वी हैड अ मॉडल कॉल्ड मेघालय मॉडल, एंड दैट इज अ मॉडल दैट हैज़ बीन डिवेलप्ड over the years. And today the model is called the impulse model. पहला तो मेघालय मॉडल बोल रहा है, ये स्टेट का नाम था, लेकिन जब एप्लीकेशन और रेप्लिकेशन जो हो रहा है दूसरा स्टेट में, तो ये नाम थोड़ा मतलब अडेप्टेबिलिटी के लिए, ब्रांड के लिए वो काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इम्पल्स मॉडल का नाम दिया है. तो अंडर इम्पल्स मॉडल हम लोग 2 किस्म का काम कर रहा है. एक ये मॉडल 5 P's और 5 R's में काम कर रहा है. तो ये 5 P's और 5 R's ये 10 पिलर्स का काम है. तो 5 P's इज़ प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, पुलिसिंग, प्रेस एंड प्रोसिक्यूशन. तो ये है पॉलिसी एंड प्रोसीडियर लेवल जो हम लोग मतलब स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहा है. ट्रैफिकिंग एक क्राइम इशू है जी. एक हम लोग का जो मतलब NGO लोग या सोशल एक्टिविस्ट अकेला काम नहीं कर सकेंगे. हम लोग लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करना चाहिए, सोशल वेलफेयर, लेबर, टूरिज्म. तो ये है स्टेक होल्डर जो हम लोग का प्रोसीडियर और एंगेजमेंट में आता है कि ये हम लोग ट्रैफिकिंग का बारे में
जो नेटवर्किंग होता है ये सब स्टेक होल्डर एक साथ आ रहा है। और जो 5 Rs है ये रिपोर्टिंग, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रिपैट्रिएशन एंड रीइंटीग्रेशन। ये जो 5 Ps है ये एक्टिविटी लेवल में है। तो हम लोग का जो जब रिपोर्टिंग केस होता है हम लोग की तरफ में, तो हम लोग एक्शन ले रहा है कि रेस्क्यू जो ऑपरेशन कर रहा है ये लॉ इन्फोर्समेंट कर रहा है, पुलिस लोग कर रहा है, लेकिन हम लोग का जो मॉनिटरिंग कर रहा है हम लोग मतलब सब डिपार्टमेंट में ये मॉनिटरिंग कर रहा है कि रिसोर्सेज जो है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होता है, तो एक्शन के लिए सब स्टेक होल्डर्स एक साथ आ रहा है और इंटरवेंशन हम लोग ये देख रहा है कि नेटवर्किंग कैसा चल रहा है, जो हम लोग उसका जो विक्टिम है उसका राइट मिलना चाहिए। तो दैट्स हाउ द इम्पल्स मेघालय मॉडल या जो अभी इम्पल्स मॉडल बोल रहा है काम में हम लोग ये करें। और उसका बाद हम लोग ट्रेनिंग बहुत करते हैं। ट्रेनिंग हम लोग एनफोर्समेंट के लिए भी देता है। हम लोग इसका बारे में ये जो NGO लोग, तो वी हैव 58 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट में जो 15 साल से हम लोग के साथ काम कर रहा है। ये अलग किस्म का जो पार्टनरशिप है, एक स्टेट पार्टनर होता है और एक डिस्ट्रिक्ट पार्टनर होता है। स्टेट पार्टनर में स्टेट हेडक्वार्टर में उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग का जो मॉडल है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और नेटवर्किंग स्टेक होल्डर्स के साथ कर रहा है। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो स्टेट पार्टनर के साथ काम कर रहा है, क्योंकि रीच में और डाइवर्सिटी में, लैंग्वेज की तरफ से, जोग्राफिकल लोकेशन, जो हम लोग के स्टेट पार्टनर्स और डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स नहीं होने से तो हम लोग का रीच बहुत लिमिटेड होता है। तो इम्पल्स मॉडल हम लोग पार्टनरशिप का साथ कर रहा है। So that's how we have been working over the years, and so far we have dealt for 4,600 cases 15 साल में जो हम लोग इंटरवेंशन किया है। अभी हम लोग ये फॉलो अप भी कर रहा है, तो ये सक्सेस जो है मतलब कोई भी री-ट्रैफिक नहीं हुआ है। तो दैट्स द सक्सेस ऑफ द इम्पल्स मॉडल, क्योंकि कभी कभी जब वी डू रेस्क्यू ऑपरेशन री-ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन ये इम्पल्स मॉडल क्योंकि नेटवर्किंग बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है एंड अंडर द 5 Ps, तो ये हम लोग फॉलो अप करता है 2 साल के लिए, कि ये देखने के लिए कि वो जो लड़की या छोटा लड़की या एक औरत जो ट्रैफिक हुआ है उसका री-ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। तो रिहेबिलिटेशन पैकेज, रीइंटीग्रेशन पैकेज, हम लोग का नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वी गॉट द सेकंड प्राइज इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर, एंड दैट्स वन ऑफ द अचीवमेंट फ्रॉम द ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क अंडर द जापानीज मोस्ट इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एंड उसकी तरफ से हम लोग ये जो मॉडल अभी जो 8 स्टेट में मतलब रेप्लिकेशन हो रहा है, वी हैव रेप्लिकेटेड म्यांमार में, नेपाल और बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्ट की जो चैलेंज है ट्रैफिकिंग में, हम लोग खाली इंटरस्टेट का ट्रैफिकिंग नहीं होता है, क्रॉस बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, चाइना, प्रॉक्सिमिटी में हम लोग जोग्राफिकल लोकेशन, हम लोग एक ट्रांजिट रूट होता है क्यू ऑफ द बॉर्डरिंग डिस्टेंस, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। एंड दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न दैट वी आर वर्किंग अक्रॉस द बॉर्डर। और अक्रॉस का बॉर्डर में बहुत पार्टनरशिप हम लोग दूसरा संस्था से के साथ काम कर रहा है, जैसे रिपैट्रिएशन करने से, तो ये फॉलोअप करने के लिए बहुत आसान हो जा रहा है जब पार्टनरशिप उस तरफ भी है। और ये 2 साल के लिए जो इंटीग्रेशन का मतलब एक्टिविटी होता है एक विक्टिम के लिए, पार्टनरशिप की तरफ से हम लोग सक्सेसफुल होता है, लेकिन हम लोग अकेले काम करने से कभी सक्सेस नहीं होता है। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी वर्क ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये क्राइम रिलेटेड इशू, तो एनफोर्समेंट का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो सो फार हम लोग ऑलमोस्ट 25,000 का एनफोर्समेंट ट्रेनिंग किया था पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, या नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी, यूनिफॉर्म पर्सनल, बॉर्डर फोर्सेस। तो ये सब का जो ट्रेनिंग होता है हम लोग की NGO से हम लोग मतलब पार्टनरशिप करके टेक्निकल असिस्टेंट दे रहा है। एंड टुडे ये प्रोग्राम बहुत सस्टेनेबल हो रहा है। तो हम लोग किस किस्म का टेक्निकल असिस्टेंट देता है, कभी कभी हम लोग रिसोर्स असिस्टेंट बन जाता है, इंफॉर्मेशन देता है, मतलब स्ट्रेंथनिंग की प्रोग्राम दे रहा है। तो ये पार्टनरशिप अभी ये मॉडल का जो रेप्लिकेशन 15 साल से मतलब चल रहा है। हसीना, आपको नहीं लगता कि जब आपने ये इम्पल्स मॉडल स्टार्ट की, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट की मैक्सिमम एजेंसीज हैं, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन सब के साथ उन सबको एक क्लब अप करना और उन सबको तालमेल बिठा करके काम करना, क्या इसमें कठिनाई नहीं आई होगी? कठिन तो बहुत आए थे। आई मीन मतलब कन्वर्जेंस जो मेथड है, ये सब स्टेक होल्डर इतना अपना इंडिपेंडेंट का जो काम कर रहा है, और जब एक साथ एक अम्ब्रेला में जब हम लोग लेके आया था, आसान नहीं था। वो पार्टनरशिप कभी नहीं कर रहा है,
और 2 वो अलग अलग से ढंग से काम कर रहा है। गवर्नमेंट ही एक है, मतलब एक कंट्री है, लेकिन अपना अपना से काम ढंग से कर रहा है। तो इसलिए जब हम लोग शुरू किया था तो ट्रेनिंग बहुत किया था, ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस। फिर हम लोग प्रेस की तरफ से बहुत मदद मिला है, और प्रेस जो हम लोग का जो लॉबिंग एक्टिविटी था वो प्रेस से मतलब हम लोग इतना मतलब अवेयरनेस किया था, और इन्फॉर्मेशन जो लिखा है सेंसिटिविटी से, तो वो मतलब थोड़ा वो जो पार्टनरशिप था स्टेक होल्डर्स का साथ, मतलब वो थोड़ा मतलब आगे बढ़ा है। सो आई वुड से द प्रेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो 5 P's में बोला है कि प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, प्रेस, पुलिसिंग एंड प्रोसिक्यूशन, तो ये भी बहुत मतलब मदद मिला है। And I think today we see this as a very important element, the role of the press to report, because it creates more awareness to the public. आपका संदेश बहुत लाखों लोगों तक वो पहुंच जाता है जो आप सूचना देना चाहें। निस्संदेह मीडिया का रोल तो बहुत बड़ा होता है। जीवन का कोई बहुत कठिन क्षण, कभी ऐसी बहुत लगा हो मन में कि मैं अब फंस गई हूँ या मैं अब हारने वाली हूँ, ऐसा कोई क्षण आपके जीवन में कभी आया हो? I would say, I mean, over the last 20 years, the first challenge was, I started very young. जब मैं शुरू किया था बहुत छोटा था, तो उस टाइम जो enthusiasm था वो कभी पता नहीं चला कि इतना साल से जो हम काम कर रहा है, जो steps और challenges था, I think taught me to what I am today, and the fact was that there were many times when I said, should I continue to do, ये करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्राइम रिलेटेड इशू जो होता है मतलब थ्रेट्स, अपोजिशन, थ्रेट होता है, अपोजिशन होता है, challenges होता है, and the worst is when you are a woman, that is more difficult, you are working in a situation with uniformed personnel, which is all a man's world, and then you have to convince, उसका convincing power जो है वो एक औरत से होना चाहिए, and that was a difficult challenges. And I remember way back in 2000 when I said, no, I should continue my, to do what I'm doing, go back and study and do, my masters and, carry on. Then I realized, no, there was something I was meant to do, so I should be doing it. And I think the motivation continued to me every day, because every life that has been, rescued by our organization, when I see a change in those women's life, that continued to give me the hope that yes, I'm making a difference. And I think that difference, if I was not doing what I'm doing today, I would never experience this difference. I come from a business school background. If I would have joined a corporate, I would have never seen the difference of change that I could bring. And and I think that's something that make me continue no matter what hardship I have. And I think the work that has grown, Abhi, and like especially now we have worked so much with the children who have been trafficked to the coal mines in Meghalaya. So the coal mine situation in Meghalaya with the PIL that was filed, public interest litigation to the National Green Tribunal. I think we saw the success that 7 long years जो हम लोग campaign किया था कि ये मतलब बच्चा लोग जो ट्रैफिक हुआ है बांग्लादेश से, नेपाल से, जो environment में मतलब in coal mining जो काम कर रहा है, today we are being able to prevent. So I think when things comes like this, it makes me feel yes, it's worth it, what I'm doing. So that's something that makes me do what I'm doing. And it's never been easy, but I think every time you go through difficulty, I always remind of myself of the few little life that I change, that few eyes, and that makes me do what I'm doing. जितनी NGOs हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसा क्यों, किस कारण से समाज में ऐसी जो धारणा है, माइंडसेट समाज का ऐसा क्यों NGOs के प्रति क्यों होता जा रहा है? आई थिंक ये जो माइंडसेट NGO की तरफ में जो अभी मतलब डिबेट हो रहा है कि NGO एक मनी मिंटिंग बिजनेस होता है, I would say there's always a good side of everything and the bad side of everything. Where there's the government, हम लोग के बारे में उसका good और side bad भी है, enforcement की तरफ good और bad होता है, NGO की तरफ मतलब both side होता है. लेकिन हम एक social entrepreneur की तरफ से जो मेरा मिशन एक ड्रिवन मिशन था, और ये ड्रिवन मिशन जो है हम लोग we have been working through the platform of our organization. So I think when any organization is led by a social entrepreneur, there's always a difference.
But if an organization is being set up for a project, then it's completely different. Because you are there for a project. Not but for here, I am not here for a project. I'm here for a mission. I'm a social entrepreneur. I got a team of people to join hands, and the team grew over the years, and the team became an institution. तो ये अलग मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम है. और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू हुआ है प्रोजेक्ट की तरफ से जस्ट टू गेट फंडिंग, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल. सो दैट्स आई थिंक दैट्स ऑल्सो बिकॉज सो मेनी इज़ मशरूमिंग. इतना ज़्यादा है जो प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, मिशन के लिए थोड़ा कम है, इसलिए मतलब NGO का नाम थोड़ा मतलब everybody is talking bad about it. But I think I've seen many social entrepreneurs in the country who have done wonderful work, and I think there's a need to have that kind of work to be done by social entrepreneur. And in my case, I think my own experiences has grew over the years because there have been a lot of like-minded women who join hand with me, and like-minded men themselves who have given hands to me, whether they are from the sector of enforcement or from the government or from from the NGO sector and also from the media. So I think that's the fact that we are here for so many years and we've been existing, and the expansion that we have in many countries, I think speaks of the work that we have done, that it is not driven by project. And जो impulse model जो हमने मतलब बात किया है, जो 5 P's and 5 R's, it's a mission driven. जो money is important. You cannot run without money. Everything. There's no activity without funds. But that is not the sole importance of social development, because social development has to be driven by the idea, by the innovation, and by the needs. And that's what impulse model is all about. So it's driven by that. So money came because of the work. We grew because we were supported. But it is not completely that we will disappear without money. We'll continue to do because we know how to generate sustainability as well. हसीना, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जितनी भी महिला दर्शक हैं इस कार्यक्रम को, वी टॉक को देख रही होंगी. आप चलते चलते मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कि जो महिलाएं, लड़कियाँ सोशल वर्क के फील्ड में आना चाहती हैं या अपने करियर की तरह से उनको चुनना चाहती हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह? Those who wants to get into development, when you are coming from any field, whether you are a master in social work or you're in sociology or anything, the first core is that you have to be driven by an idea. You have to be driven by a passionate idea that you have. Then only you should join development, because development does not have everything ready-made. You have to be willing to give your time, your energy, and they say, when you are passionate about something, nothing can stop. So that's very important for any young person who wants to join development. They have to be passionate. चलते चलते आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि यहाँ शिलोंग में मातृसत्तात्मक समाज है, महिलाएं हमारे परिवार की मुखिया होती हैं, उस कारण वो बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, रिस्पेक्ट है वो गेन करती हैं. तो क्या आप समझती हैं कि महिला अगर प्रमुख है तो उसमें उसका स्टेटस राइज होता है और उसमें कहीं ना कहीं क्राइम में कमी आती है, या उसका जो लेवल है उसको हम कह सकते हैं एम्पावर, वो कितना एम्पावर्ड होती हैं? इफ़ यू आर फ्रॉम अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, आप लोग मतलब यू आर बोर्न टू बी एम्पावर्ड. I think we are fortunate to be in a matrilineal society because the culture accepts women, very more openly. We don't have, female infanticide issue and others. Education is very open to both boys and girls. But matrilineal society is not something that gives the power for women to become change makers, or the power for women to actually not face crime. I think crime, like I said in the very beginning, crime सब जगह में होता है. Even in matrilineal society, we still have crime, and I think we face similar crimes like any part of the world. There's no difference, and the only difference is that we are in a better off position because we can make choices. We are allowed to do what we want to do, but that doesn't mean that we could see many leaders. We still have very, very few leadership in women. And I think that is something that has to do with the fact that a lot of people are quite easy in a matrilineal society. They don't, you see many women working, many women in the market force, in the government, in the corporates, but we see very less women in the leadership position. And if you have to be empowered, then we also have to take lead in the empowering. You have to be a lead.
So I think that's democracy. You have to have that leadership where you're leading. So I think that is something we still have to try for. आपसे मिलकर हसीना बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ हमारी एसोसिएशन आपके साथ ऐसे ही जारी रहेगी, हाँ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।